Hello students, this is the second video of transportation system in humans. So we were discussing the circulatory system, and in the first video we have covered the topic blood. Now in this lecture we are going to discuss about the next component of transportation system, which is blood vessels. Yes, so what are blood vessels actually? These blood vessels are a type of container, you can say, in which the blood flows. So there are mainly three types of blood vessels present in human. The first is your arteries, second is veins, and third is capillaries. In this figure, you can see this red, the one shows in red color is your artery, the one shows in blue color signifies vein, and here you are seeing a network, a very interconnected network of arteries and veins. This network is nothing, just capillaries. So there is one more information we have about arteries is this, that small branches of arteries are called arterioles. So here you can see it's a main artery, and these branches you are seeing here, see this is the branches. These branches are known as arterioles. Likewise with the vein, this is the main vein we have, the main, and from here you can see the branching. These are the branching, and these branchings are known as venules. So we will first discuss artery. Artery का जो plural form है, that is arteries, you call them arteries. So there are arteries, there are number of arteries present everywhere in our body. ऐसा नहीं है कि बॉडी के एक ऑर्गन में प्रेजेंट होगी, आपके बॉडी के हर ऑर्गन्स में आर्टरीज का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है. So why artery is so important? Because what it does, it carries oxygenated blood. And now what is oxygenated blood? Basically the blood which is rich in oxygen. ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन होता है, उस ब्लड को कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब आर्टरीज करती क्या है? आर्टरीज इस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से? हार्ट से. हियर यू कैन सी द हार्ट. फ्रॉम हार्ट से ये ले जाती हैं इसको बॉडी पार्ट्स में. सेकेंड है आर्टरी के स्ट्रक्चर के बारे में. The arteries has a thick and elastic wall. Now this question comes in your exam, that why arteries has thick and elastic wall. So the answer is because होता क्या है, जो हमारा हार्ट है, that is a pumping organ, right? This organ pumps heart in, this organ pumps blood in very high pressure. So in arteries the blood enters with very high pressure, and if the pressure is high और arteries का जो wall है thin हुआ, so there may be chances that artery में rupture. तो chances होते हैं कि आपका जो artery है वो burst हो जाए, वो pressure को control नहीं कर पाएगा. So in order to hold the high pressure of the pumping blood, the arteries are thick walled and elastic. Second update we have is aorta. The aorta is the largest artery present in the human body. Now this point is very important. There is an exception. As you know, science is all about exception. So one exception we have in case of artery, that there is an artery called pulmonary artery. Now this artery do the reverse function. ये उल्टा काम करती है. उल्टा काम करने का मतलब है that it carries deoxygenated blood. ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं है, ये उस ब्लड को कैरी करती है. अब सी कहां से कहां कैरी करती है? इट कैरीज deoxygenated blood from the heart to the lungs. Here you can see हार्ट से लंग्स के पास लेके जा रही है. बच्चे लंग्स के पास ले जाती है so that lungs
क्या करेगा, इस और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। क्यों? क्योंकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दिस ब्लड कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हेन द पल्मोनरी आर्टरी रीचेस लंग्स, लंग्स क्या करेगा, इट एक्सचेंज द गैस, वो CO2 को बाहर निकाल देगा और O2 उस ब्लड में आ जाएगी। एंड नाउ द साइकिल रिवर्स, एंड नाउ द साइकिल स्टार्ट्स। नाउ फिर क्या करेगा ये लंग्स, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हमारे हार्ट में भेजेगा और ये साइकिल ऐसे कंटिन्यू होती रहती है। Next blood vessel we have is vein. Yes, so the blue colored blood vessel is signified by vein. So vein क्या करता है, that vein carries deoxygenated blood from where? From the body parts to the back to the heart. ये बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में लेकर जाता है। द वेन इज थिन वॉल्ड, क्योंकि बॉडी से हाई प्रेशर में ब्लड रिलीज नहीं होता, सो देयर इज नो नीड ऑफ थिक वॉल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट vein is, 1 mark का क्वेश्चन यहाँ से आता है, that vein has valves. Now what are these valves? These valves are just like door, and these door regulates the entry or flow of blood. बेसिकली ये वॉल्व ध्यान रखते हैं कि आपका जो ब्लड बॉडी से, कौन सा ब्लड जाएगा बॉडी से हार्ट के टूवर्ड्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये वॉल्व क्या करते हैं, जैसे ही ब्लड फ्लो बॉडी से हार्ट की टूवर्ड्स मूव करना शुरू करता है, ये वॉल्व जो है वो क्लोज हो जाते हैं। अब क्लोज हो गए तो उससे क्या होगा, दैट दीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा। सो ये क्या करता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। किसको प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो को। अगेन देयर इज द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी, दैट इज वेना cava. So we have another exception with the vein also. There is a vein called pulmonary vein. This vein just do opposite of the main vein. ये क्या करती है pulmonary vein? This pulmonary vein carries oxygenated blood from lungs to heart. Here you can see in the diagram. ये pulmonary vein है हमारे पास. Now what this pulmonary vein will do? This pulmonary vein take oxygenated blood from the lungs and give it to the hearts. And here you can see that deoxygenated blood travel करता है वेन में, but pulmonary vein क्या है, उसका exception है। Moving on to our third blood vessel, that is capillaries. So capillaries are very very important. जितना important artery और vein है, उतना ही important हमारे पास क्या है, हमारा capillaries. So capillaries क्या होते हैं, capillaries are the smallest and thin walled vessels. जी, दिस इज द वेरी वेरी थिन, 1 सेल थिक होते हैं। जितना थिक एक सेल होता है उतने ही थिक ये उतने ही थिन कैपिलरीज होते हैं। नाउ वेयर आर दीज प्रेजेंट्स? सो होता क्या है दैट इन आवर बॉडी कैपिलरी इज प्रेजेंट वेरी नियर टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी में जहां जहां सेल्स हैं, हर सेल के आसपास नियर एरिया में कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, एंड देयर इज अ वेरी लार्ज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज ऑल ओवर द बॉडी। सो दीज कैपिलरीज आर प्रेजेंट बिटवीन द आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स हम पढ़ चुके हैं, ब्रांच ऑफ आर्टरी। वेन्यूल्स हम पढ़ चुके हैं, ब्रांच ऑफ वेन्स। सो इन दोनों के बीच में, हियर यू कैन सी, ये हमारी बहुत सारी, ये हमारी जो ब्रांचें आ रही हैं, दीज आर venules and these branches are arterioles. Then they form a network और इस नेटवर्क को हम बोलते हैं capillaries. Now what the capillaries will do? Capillaries will transport or exchange the oxygen bring by the artery. आर्टरी जो ऑक्सीजन लेकर आता है, कैपिलरीज क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को लेगा और नियर बाय सेल्स को ट्रांसफर कर देगा। और नियर बाय सेल क्या करेगा, अपना जो CO2 है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो कैपिलरीज को दे देगा। नाउ कैपिलरीज क्या करेगा, फिर वो वेन्स को देगा, जिससे वेन्स क्या करेंगे, हार्ट को देंगे, और हार्ट से फिर वो वापस लंग में जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। So sum up करने के लिए we have a difference. So here you can read the difference. बहुत important है, डिफरेंस आ जाता है।
समटाइम्स दे आस्क डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, और कभी कभी तीनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं. इसमें से देयर इज अ वन थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ओनली ल्यूमेन. सो व्हाट इज ल्यूमेन? ल्यूमेन इज बेसिकली, सपोज दिस इज माय आर्टरी, राइट? Artery is like a tube-like structure. So the space present inside the artery is called lumen. तो आर्टरी के अंदर द स्पेस इज वेरी नैरो, वेन के अंदर स्पेस क्या होता है? वाइड. लॉजिक भी बहुत सिंपल है, क्योंकि आर्टरी थिक होती है, बहुत मोटी होती है, तो ज्यादा स्पेस नहीं बचेगा. सिंस वेन्स आर थिन वॉल्ड, तो इनके अंदर का जो स्पेस होता है ज्यादा होता है, यानी कि इसमें ल्यूमेन ज्यादा होता है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द ब्लड वेसल्स. मूविंग to our next component, a very important component, which is heart. So here are some facts about human heart. In this video we are going to learn some facts, and how heart works will be posted in the next video. So here are some features of heart. So as you all know that human heart is a four-chambered heart. Four-chambered means it has four parts or four rooms. The four rooms are, here you can see, left, room number 1, room 2, chamber or room number 3, and this is room number 4. So there are four chamber. Okay. So heart is made up of mainly cardiac muscles, which we have studied in class 9th. Cardiac muscle से बना होता है, involuntary muscles होती हैं ये. And now where it is located? It is located in between the lungs. Yes, it is located between the lungs. And now what is the size of human? So it is of fist size. Fist मतलब मुट्ठी. जो human का मुट्ठी होता है, उस साइज के अकॉर्डिंग हमारा हार्ट होता है. Another interesting fact is that our heart is tilted, slightly tilted, not completely, थोड़ा सा लेफ्ट के टूवर्ड्स tilted होता है. And another thing is that heart weighs about 300 grams. So इसका approx जो weight होता है, that is 300 ग्राम होता है. And you all know that it pumps the blood all the time. Yes, क्योंकि अगर इसने ब्लड पंप करना स्टॉप कर दिया, व्हाट विल हैपन? कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और बॉडी में ब्लड नहीं पहुंचेगा. ब्लड नहीं पहुंचेगा तो देयर विल बी नो ऑक्सीजन, एंड द चांसेस दैट ह्यूमन मे डाई इन सम टाइम. सो देयर इज अनदर थिंग दैट हार्ट बीट्स अबाउट 100,000 टाइम्स अ डे. एक दिन में हमारा जो हार्ट है वो 10,000 टाइम बीट करता है. वी विल डिस्कस व्हाट इज हार्ट बीट इन द नेक्स्ट वीडियो. So there is another detailed description of heart. So first point we have already discussed. So see, there are four chambered as we have discussed. Now we categorize them. Okay. So the upper chamber, you can see these are the upper chamber 1 and 2. These upper chambers are known as what? Atrium or auricles. आप इनमें से कोई भी एक नाम बोल सकते हो. तो एट्रियम बोलो, दैट इज ऑल्सो इजी. तो इसमें से एक होगा लेफ्ट एट्रियम और दूसरा होगा राइट एट्रियम. लोअर चैम्बर को कहा जाता है वेंट्रिकल्स. सी, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज द राइट वेंट्रिकल. One important point to note here, atrium are the receiving chamber. Receiving chamber means what they receive? They receive blood. Okay, so atrium जो है वो blood receive करेगा या तो किससे? lungs से या तो body से. Okay, दो ही तरीके से आ सकता है. और दूसरा है ventricle. Ventricle क्या करेगा? blood को pump करेगा. pump मतलब हार्ट से बाहर भेजेगा. कहाँ भेजेगा? सेम लंग्स पे भेज सकता है या तो फिर बॉडी पार्ट्स को भेज सकता है. तो ये these 2 points are very very important. Don't get confused. Try to understand it again. And last, in the last slide we have, so here you can see the left and right atrium are separated by a septum. एक जो बीच में लेयर होती है, पेरिकार्डियम की लेयर होती है, सेप्टम कहते हैं उसको. और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसको इंटरवेंट्रिकल सेप्टम कहते हैं. These things are not in your syllabus, so don't worry about it. Okay, but the role of septum is important.
What septum means? They are separated, they are divided by some layer, and that layer is known as septum. Okay, so what septum helps in? Septum prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. As you should know that the left part of the heart supports or always have oxygenated blood, right? Whereas the right part always have deoxygenated blood. So it prevents the mixing of deoxygenated and oxygenated blood. Another thing, that heart has two valves. Valve means we have discussed doors like structure. So there is a valve called tricuspid valve. Another is bicuspid. So here you can see it is a tricuspid valve which is present between right atrium and the right ventricle. Another, this is a mitral valve or bicuspid valve present between left atrium and left ventricle. So I hope students, so far you are able to understand about the circulatory system. In the next video, we are going to learn about the roles of these valves, how the blood is pumped out, how the blood enters in the heart,